बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले काबतुल्लाह की मुख्तसर तारीख़ अर्ज़ कर रहा था और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो काबतुल्लाह को दोबारा तामीर फरमाया और कुरान करीम ने उसका तज़किरा किया और फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया, उसका तज़किरा हो रहा था। आगे बात चलाने से पहले ऐसे करते हैं, कुछ कॉल्स आए हुए हैं तो कॉल्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस इस मौजू की तरफ आते हैं। जब आप सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी मौजू के ऊपर हो। जो भी बात आप करना चाहते हैं बशर्ते कि वो इस्लाह उम्मत के बारे में हो और अखलाक के दायरे में हो। ऐसे करते हैं, कॉल्स की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam, my dear brother. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। एंड हाउ आर यू? Very well indeed. Haven't spoken to yourself for quite a few weeks. इज़ दिस Just वाइटिका खान? no. It's Javid from North Wales. MashaAllah, by Javed. I'm sorry. Sometimes, Not at all. sometimes the voice seems similar. No problem at all. At least we're all Muslims. That's Alhamdulillah. the main thing. MashaAllah. I just want to share something with yourself. MashaAllah. I've been listening to yourself since you've been on there. Ji. And What, today? You've been listening since today or previously as No, well? today, just now. No, Acha. I'm a regular listener and Acha. also a regular caller as well. Ji. But mashallah, it's an honor to listen to you today again. But what confuses me is why is it that some of our sheikhs on Friday, on Jummah time, that they cannot be so loving to Allah subhanahu wa ta'ala. Every time you sit in the mosque on Friday, all the imams, all the sheikhs, all they want to do is scare the hell out of you. That as Allah subhanahu wa ta'ala is going to punish you, going to put you into hell, going to burn you alive. And, there's a WhatsApp going on at the moment that if you miss your prayers, there's going to be a devil with burning eyes and nail as long as this and that. Why not just help us to become better Muslims? And look how beautifully you've been explaining the beautiful, our Nabi, Prophet Ibrahim Islam, how beautifully you have expressed it. Why is it that every Friday, all we want to do is scare the hell out of a Muslim? Why? You've got a very valid point, brother Javed. Is it Javed, did you mention? It is Javed. Ji. I totally agree with you that we should try and be very positive about things. Because our Allah is very loving. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the most loving of the creation, and he's always used the beautiful ways. It's interesting you say that because only last week I was speaking to, stay on air because the contribution you're making and the point you're making is very valid. Usually I ask people to put the phone down and then I will. Only last week I was speaking to some ulama and it's the exact point I was making, and I think there was some young ulama and some of them are not as experienced as the community would have them to be, and they're not sometimes mature and sometimes they are quite excited, Josh. So I was saying to them that when you speak to people, make it easy for them. And then I gave the incident. I'll say it in Urdu and English because we have lots of Urdu listeners who may not fully understand English. So that's why if I go to dual language, that's the purpose. तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ था वो हमेशा बड़े प्यार से, मोहब्बत से और अगले के साथ उनके हमदर्दी के साथ, with love and care. Care is the key word I'm looking for. And he was sending Muaz radiyallahu ta'ala anhu on a very, very important mission. Sayyidina Muaz radiyallahu ta'ala anhu ko Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam governor बनाकर भेज रहे थे. He was sending him as a governor of a different area. Yeah. और Muaz radiyallahu ta'ala anhu, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam accompanied him to the end of Medina. And he said, Muaz, you're going to Yemen, you're going to this area, another country, another area, and you're going to be in charge over there. आप वहाँ के governor होंगे. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके प्यार की वजह से, out of respect for him,
The Prophet ﷺ was walking and Muaz was on the horse, and he kept going out of respect. You know, when you respect somebody, you want to give them love, and you walk them to the end of your garden or the end of the street just to show them that love. And then he held Muaz. फिर उसके बाद मुआज रज़ी अल्लाह तआला को उन्होंने पकड़ा, and he looked towards him and he said, Muaz, he said, I'm sending you there as the leader of that place. And he said, these are the words. He said, Bashiru wa la tunaffiru. That's the first instruction. Yassiru wa la tu'assiru. मुआज को पकड़ा और फरमाया कि तुम अभी वहाँ जाकर गवर्नर बनोगे, बशारत देकर लोगों को उनके साथ मामला करना, give glad tidings and nice news and beautiful and positive way of expressing yourself. وَلَا تُنَفِّرُوا. Don't scare off people and don't be using negative strategies. That's the first line he said. And then the second thing, he said, يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. يَسِّرُوا, he said, make it easy for people and don't overburden them, O Muaz. Subhanallah, subhanallah. And this is the way, this is the training the Prophet is giving to his leaders, you know, the one that he's going to make leaders. And I said to the ulama that were there, I said, I don't classify myself as a senior to you guys, but I'm giving you this training, I'm teaching you, I want you to be imams and I want you to be leading the people with these two lines of the prophetic advice, prophetic training. मैं जब आपको ये बतला रहा हूँ कि आप इमाम होने, and myself as an imam for 26 years, this is the way I've always wanted to express myself in the Jummah khutbahs, in my daras, amongst the people. So you've hit the nail on the head, and you're right. You know, some people try and defend their positions that we are imams, we are alims, and I want to defend them. You know, there's certain things we have to be open about and say, no, these are the mistakes that a lot of our satis, our Muslims are making. Let's not brush them under the carpet. Let's bring them above board and think, how can we rectify them? And I know the reason I'm speaking about this because there's hundreds of our imams and muftiyan who listen to my program. I know that because they speak to me, they ask me, certain times I mention things and they come back to me. So I hope they are listening, and you've brought I up a hope valid so as well. and you've brought up a very valid point, Jazakallah khair. And that's why I say, May I express one more request? Gigi, we are all listening. And that's why I say I want the public to contribute, because certain things that will not cross my mind or I can't say it directly, but we'd like to hear from the public. You know, as you said it so beautifully and so kindly, that some of them are youngsters, some of them are still learning. But wouldn't it not be nice to praise any Muslim? First of all, I'm a great believer. Anybody that comes to the mosque, whatever prayer he's coming in for, it is a blessing that he has come into the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Would you agree with me? Totally agree with you. In fact, Right. I would go one step ahead and say that we should use positive ways of speaking to people and bringing them to our deen, whether they are Muslims or non-Muslims. I'd like to just share something with yourself and the listeners, आपके साथ भी और बाकी जो, that in the masjid that I am the imam, वहाँ हमारे यहाँ first Saturday of the month we have non-Muslims coming in, and this has been happening for about 11 years, I think, about 10 years, 10 to 11 years, I forget now. On even this last Saturday, and we have lots of non-Muslims coming in, and I and my other satis, I have a team of people, and from 11 o'clock till 12 o'clock, that 1 hour, they come inside the masjid, we talk about deen. They don't have to accept Islam, but we talk to them, we encourage them, we speak to them nicely, and we lay a few little, you have refreshments, of course. So we should be a positive way of expressing, not just to the Muslims, to the non-Muslims as well. जो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, बेहतरीन अंदाज के अंदर we need to express ourselves, because that's what Islam is. Beautiful. Beautifully said. Beautifully said. Absolutely beautiful. And you know, would it? Ji. Sorry.
would it not be nice to praise the person that's coming to the mosque on Friday and express to that brother, our elders, any age group, if you've only managed to pray one prayer on Monday, two prayers on Tuesday, increase it. Don't scare them off. Don't put them off and say, if you're not praying 5 times a day, you are definitely going to hell. First of all, who are we to judge another Muslim? True. And you're right, we should try and encourage everybody, help them along, see what the stumbling blocks are, वहाँ उस शख्स के साथ कौन सी रुकावटें हैं और उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करेंगे. So a good suggestion, nice contribution, Jazakallah khair. And these sort of contributions, these sort of suggestions, these sort of advice, do keep them coming in and share. And I'm sure you never know who may take this on board. कोई पता नहीं कौन इस चीज़ को, इन बातों को सुन ले, समझ ले, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको ले आए. अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मौलाना साहब, आपके बहुत मशकूर हैं कि आप मौका देते हैं और इतना ज़र्फ दिखाते हैं और इतनी जो दीन से आपकी मोहब्बत है वो ज़ाहिर होती है कि कभी भी आप बहुत तहम्मुल के साथ हमें टाइम भी देते हैं और बात भी सुनते हैं. तो ये आपसे दीन की जो अकीदत है वो ज़ाहिर करती है कि कितनी आपको दीन से मोहब्बत है. और मैं बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो जो डार्क शेड हमारी सोसाइटी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से, दनाई से, जो उनका तो खैर कोई मुकाबला नहीं कर सकती, जिस तरह उन्होंने डार्क शेड वो हटाए. आज आप देखें अपनी यूथ को कि बहुत सारी उनकी सलाहियतें, बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारा वक्त जो है वो इन चीज़ों में ज़ाया हो जाता है कि जो चीज़ें हराम हैं वो देखें कि आप देखेंगे कि फिर वो जज्बात, क्योंकि हर एक इंसान जो होता है वो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है. किसी एक इंसान के दूसरे के फिंगर प्रिंट भी मैच नहीं होते. और वो एक अब तक कोई एक अच्छा डिबेटर हो तो दूसरा कोई उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो. लेकिन मैं इस वजह से नहीं कह रही, लेकिन आप देखें यूथ को कि जो चीज़ें हराम हैं, जैसे एक गैर महरम जो है लड़की है या लड़का है तो पूरी तवज्जो जो है वो एक दूसरे को ग्रेट फिजिकल ब्यूटी और एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड प्रिटी एज पिक्चर और सारे ये ग्लैमरस जो चीज़ें और जो सेलिब्रिटीज़ की चीज़ें जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए मेकअप और पता नहीं क्या क्या अजीब भूलिए और ये सारा कुछ, ये क्या हम अपने क्रिएटर को अट्रैक्ट करें? क्या हमारे जो है माल वो इस यूथ में हम ऐसी यूथ तैयार करें जो हमारे सहाबाए किराम को रिप्रेजेंट करती हो, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिप्रेजेंट करती हो. वो यूथ आज बहुत सारा उनका टाइम बाहर जाके दोस्तों के साथ ऐसी चीज़ों में लग जाता है कि बिल्कुल वो मतलब कि एक बच्चा क्या अब तक नाश्ता ना करे उसकी सेहत के ऊपर कितना बुरा असर पड़ता है. सुबह वो नाश्ता नहीं करेगा लेकिन उसको मेकअप के लिए और अपने तैयार होने के लिए 2-2 घंटे चाहिए. तो ये हमें सोचना होगा कि हम अपनी यूथ को किस तरह एड्रेस करेंगे. आपकी बात बिल्कुल ठीक है. यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे यंगस्टरों के अंदर, स्टे ऑन द लाइन, अगर जी जी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे यंगस्टरों के अंदर चूंकि वो ये एक्टर्स को यानी बाहर मीडिया को इन तमाम चीज़ों को देखकर वो चाहते हैं कि हम उस मीडिया उन एक्टरों की तरह या उस इंडस्ट्री की तरह हो जाएं और उसके अंदर बड़ी ही बाज़ औक़ात ख़राबी होती है. तो सिस्टर मैं आपसे एक बात पूछूंगा ताकि लिसनर्स भी, आपका क्या जी ख्याल जी है वालिदैन को किस अंदाज में या क्या चीज़ करनी चाहिए ताकि अगर ये या सॉरी इस जी कमज़ोरी को हम दूर कर सकें और जो सही, जैसे आप कह रहे हैं कि सहाबा कराम वाली जो सिफ़ात हैं वो इनके अंदर आ जाए, क्योंकि वो जो ज़िंदगी थी उस ज़माने की, तो वो जो सिफ़ात हैं सहाबा कराम की वो हम चाहते हैं. और वो सिफ़ात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के अंदर यानी उनके अंदर उनकी तरबियत फरमाई थी. तो वो सिफ़ात इनके अंदर किस तरह आ जाएँ, वालिदैन को क्या करना चाहिए या वाल सोसाइटी को क्या हेलो करना चाहिए? जी जी
آپ کی جی آواز. آپ نے بہت ہی ایک اتنا اچھا سوال پوچھا ہے کہ والدین کو اپنے آپ کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے ایک رول ماڈل بنیں اور ان ماڈلز کو نہ دیکھیں جو ڈراموں میں آتے ہیں، کیونکہ ڈراموں میں تو ماڈل ہوں گے، رول ماڈل تو نہیں ہوں گے. اور میڈیا میں جب آپ ہر طرف ماڈلز کو رول ماڈل کو بجائے، رول ماڈل تو ہمارے وہ ہونے چاہیے نا جن کے اوپر ہم توجہ دے کر اس ورتھ واچنگ، اس ورتھ سم تھنگ. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ وہ ماڈلز ہیں لیکن ہمیں رول ماڈل چاہیے. آئی لائک اٹ. یہ آپ کی کوٹ جو ہے کہ وہ ماڈلز ہیں اور یہ رول ماڈلز ہمیں چاہیے. اور ہمارے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی ہیں. اور سب سے بڑے اور موسٹ امپورٹنٹ رول ماڈل ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے. اور ان اصولوں کے اوپر، ان اخلاق کے اوپر اگر ہم خود ڈھلیں گے، if we get those principles and those good characteristics of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and those beautiful qualities that the Sahaba had ingrained inside them, we bring them inside us, we place them in practice in real life, and then after that we place ourselves in front of the youngsters, they will automatically become influenced by those. And when they are influenced by them, naturally they will want to adopt those as well. لیکن اس سے پہلے والے جو کالر تھے، آپ کی بات بھی بالکل کہ ہمارا جو انداز ہونا چاہیے اٹ مسٹ بی پازیٹیو انداز کے اندر. اسی وجہ سے آخری بات کہہ کر مجھے پتہ ہے وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی یہ برابر نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن. آپ اچھے انداز کو اختیار کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو دشمن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اگر آپ پیش آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کا دلی دوست ہو جائے. Quran Kareem gives us clear, confined, beautiful instructions that goodness and bad way can never be the same. Positive and negative can never be same. Use the positive strategies and with them you will notice in a caring way, in a loving way, in a nice way, in an empathetic way, in a sympathetic way, use those strategies, and even those who may have hostilities towards you, you will notice that they will become your close confidants and friends. یہ ہمارا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا. ایسے کرتے ہیں آج کے پروگرام کو ویل فنش آن دس پوائنٹ. اسی کے اوپر آج کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں. اگلے پروگرام کے اندر بھی کعبۃ اللہ کی تاریخ اور آپ کی سجیشنز اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. دعا کے ساتھ مکمل کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما. اور ہماری جب موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے اور مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. دس پروگرام آف آورز از live Monday evenings and Tuesday evenings 7 till 8 and then it's repeated at different intervals.
خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔